এই বন্ধ হয়ে গেলে কিছু করার থাকবে না। চার্জ কতটা আছে? চার্জ অনেকটাই আছে, হয়তো হয়ে যাবে। হ্যাঁ দেখেন, হ্যাঁ ঠিক আছে। Today's class is on fillers. Today's class is on fillers, right? Fillers can be of two types. One is a single filler, and the second is a double filler. That is, you have one blank space in the question and double filler, two blank spaces in the question. Right? So we will try to understand कि ये सिंगल और डबल फिलर क्वेश्चन जो है इसको हम कैसे हैंडल करते हैं. ओके, राइट. सो द फर्स्ट थिंग इज, एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम देखते हैं. राइट. The enormous space, the blank space that is occupied by the encroachers has caused difficulty in the metro project in some parts of Kolkata. So there is a blank space and the options are: A is the tiny, B is enormous, C is large, and D is square. So these are the four options which are given. Okay. Now to approach a filler question, what is the first thing जो कि हमें करना पड़ता है, right? तो उसका मैं solving clues आपको देता हूँ. I will write down the solving clues here. The solving clue, right? Number one is, read the sentence carefully and completely. Carefully and completely. Read the sentence carefully and completely. Sometimes क्या होता है कि हड़बड़ी में हम जब पेपर सॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज वो पेपर में
राइट, क्वेश्चंस ऐसा बनाया जाता है ताकि आपको एक चैलेंजिंग सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ टाइम वो देते हैं, राइट, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो नेचुरली हम हड़बड़ी में पूरा सेंटेंस शायद नहीं पढ़ते हैं और हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कोशिश करते हैं, जो कि सरासर गलत है। एंड इफ यू हैव नेगेटिव मार्किंग तो तब जाके और भी समस्या पैदा हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए रीड द सेंटेंस केयरफुली, डेफिनेटली वो तो आप पढ़ेंगे, बट ऑल्सो कंप्लीटली, आपको कंप्लीटली सेंटेंस को पढ़ना चाहिए, राइट। Read the sentence carefully and completely. Second point is, try to understand the tone of the sentence. Try to understand the tone of the sentence, right? Tone of the sentence means क्या है ना, it can be positive, it can be negative, it can be critical, it can be optimistic, आशावादी, it can be निराशावादी, pessimistic, it can be ridiculing, जो मजाक उड़ाते हैं किसी चीज का, राइट, इट कैन बी डाइडैक्टिक, यानी कोई ज्ञान दर्शन कर रहे हैं, राइट। सो इस टाइप से डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोन होता है, तो वो टोन समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो अंडरस्टैंड द टोन, ओके। नेक्स्ट इज identify the structural clues, right, कि वो sentence, you know, the pattern of the formation of the sentence, the pattern of the formation of the sentence, the pattern of the formation of the sentence, okay। चलिए एक बार क्वेश्चन पे वापस जाते हैं, and let's see, the blank space that occupied by illegal encroachers has caused difficulty in the metro project in some parts of Kolkata, right। So इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि देयर इज अ टोन ऑफ कंसर्न कि मेट्रो प्रोजेक्ट्स हो रहा है और उस मेट्रो प्रोजेक्ट्स में जो जिस लैंड के ऊपर उनका पिलर्स बैठेगा, उसके ऊपर से ट्रेन चलेगा, वो लैंड, वो जो डिफरेंट पैचेस ऑफ लैंड है, उसको इलीगल एनक्रोचर्स मीन्स जो ज़बरदस्ती आके कहीं पर बैठ जाते हैं, राइट, ओके, अपना झोपड़ी उपड़ी बना के वो वहाँ रहते हैं, राइट। सो वो लोग हट नहीं चाह रहे, वो लोग बोल रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे, राइट। नाउ इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड इशू, राइट। सो हमारा ब्लैंक स्पेस जो है उसका जो स्ट्रक्चरल क्लू, उसका जो पैटर्न होगा, वो ऐसा कोई एक वर्ड होगा जो कि बता रहे हैं इट्स क्वाइट अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ स्पेस, काफ़ी ज़्यादा जगह लेके वो लोग बैठे हैं, क्योंकि दो चार आदमी कहीं पर पुणे में है तो उसमें प्रोजेक्ट रुकने का कोई चांसेस नहीं होता, इट डजंट स्टॉप, राइट। बट हियर डेफिनेटली दे हैव ऑक्यूपाइड ह्यूज एरिया, राइट, ओके, एंड इसीलिए वहाँ पर मेट्रो का प्रोजेक्ट करने में तकलीफ हो रहा है, ओके। सो लेट अस सी, द फर्स्ट वन इज टाइनी, राइट। टाइनी मीन्स व्हाट? टाइनी मीन्स छोटा, small, right, small, right। so the small space, छोटा स्पेस, तो यहाँ पर हमें और एक क्लू जो काम करता है,
अच्छा काम करता है, दैट इज ट्राई टू यूज अ शैडो वर्ड, try to use a shadow word in the blank space before you finalize the option. जो एमसीक्यू में ऑप्शन दिया हुआ है उसमें उसको फाइनलाइज करने से पहले ट्राई टू यूज अ शैडो वर्ड. The small space that is occupied by illegal encroachers has caused difficulty in the metro project in some parts of Kolkata. तो ये small तो यहाँ नहीं होगा because it is contradicting. ये विपरीत जा रहे हैं. It is contradicting, right? The idea in the sentence. और इसीलिए हमने यहाँ पर बोला है the pattern. Identify the pattern of the formation of the sentence. जो pattern है, right? ओके वो पैटर्न, वो आइडिया जो है वो यहाँ पर इट इज कॉन्ट्रडिक्टिंग, उल्टा जा रहा है. सो टाइनी जो ए है ये आंसर नहीं होगा. बी, इनॉर्मस. नाउ इनॉर्मस इज अ वर्ड विच इज यूजुअली एसोसिएटेड with specific things, like maybe animal, right? Maybe structure, etc. right? So उस जगह पे हम इनॉर्मस यूज करते हैं. सो यहाँ पर जो हमने क्लू लिखा है, राइट, ओके, उस क्लू में फिफ्थ क्लू घुसेगा. जो द फिफ्थ क्लू इज see that the word used in the blank space appropriately fits into the sentence. It should appropriately fit into the sentence, right? See that the word used in the blank space appropriately fits into the sentence. अभी फिर से जाते हैं क्वेश्चन पे और यहाँ पर देखिए इनॉर्मस बहुत क्लोज ऑप्शन है, but it is usually associated with specific things like animal, structure, etc. So B मैं अभी तक क्लिक नहीं किया, right? We go to C. C says large. Large means काफी हद तक जो काफी बड़ा जगह, right? So large is the one which seems to be the most appropriate option. मगर, right? इसमें क्या बोला है? और एक जो क्लू है which is a very important clue is sixth. Never click on an option and shift to next question before you read and match read, understand and match all the answers, all the options, right? Because Ssc-Cgl में questions are of a slightly higher standard than only SSC, और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको अच्छे तरह से पहले
मैच करो, देख लो सारा ऑप्शंस एंड देन यू क्लिक, ओके। सो लार्ज और इनॉर्मस के बीच में हमारा कंफ्यूजन तो नहीं है, बट हमें चॉइस करना है। लास्ट वाला देखते हैं, स्क्वायर, द स्क्वायर स्पेस। अभी यहाँ पर इस सेंटेंस में कहीं पर भी कोई हिंट नहीं है जिससे कि वी कैन बी assured that it's a square space. It might be an irregular sized space, it might be a round space, it might be anything. So the sentence is not giving us any clue whatsoever that the space which the illegal encroachers have occupied is square. So D straight away is not an option. Right. So between B and C, as I said, B is usually associated. Enormous animal. Elephant is an enormous animal. Dinosaur is an enormous animal. The enormous size of Eiffel Tower is very, very spectacular. Right. The enormous size of Eiffel Tower really scares us. Right. तो उस जगह पे it's a thing, it's a tower. Right. So then हम B को ऑप्शन के हिसाब से रिजेक्ट करते हैं एंड फाइनली आवर आंसर विल बी सी। फाइनली आवर आंसर विल बी सी। सो ये हमने एक देखा फिलर का क्वेश्चन का एग्जाम्पल, और उसमें हमने कुछ क्लूज हमने यहां पर वो किया, पढ़ा। राइट। अभी चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट और क्या क्लूज हम यूज करेंगे और उसके लिए हमें कैसे वो करना है। चलिए अभी एक डबल फिलर वाला एक सेंटेंस करते हैं। द BCCI, that is the Board of Cricket Control of India, has been recently in of funds and it is has been recently involved in of funds and the enforcement directorate and the income tax department that the senior members are involved in this scam। यह है डबल फिलर वाला एग्जाम्पल। अभी ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शन ए इज इन यूजिंग, ऑप्शन बी यूजिंग है, राइट, और सेकंड ब्लैंक के लिए डाउट।
B is misappropriation and suspect. C is control and question, and D is distribution and fine. So the BCCI Board of Cricket Control of India has been recently involved in blank of funds, and the Enforcement Directorate and the Income Tax Department blank that the senior members are involved in this scam. क्लूज पे चलते हैं। सेंटेंस को हमने केयरफुली और कंप्लीटली पढ़ा। हमने कोशिश किया टोन को समझने का। द टोन इज दैट ऑफ द टोन इज अ नेगेटिव टोन, क्योंकि हेयर इट इज टॉकिंग अबाउट अ स्कैम, पैसों का इधर उधर का बातें हो रहा है, सो इट्स अ नेगेटिव टोन, राइट। स्ट्रक्चरल क्लूज हम देख रहे हैं, अभी आगे जाके देखेंगे, राइट। और बाकी जो क्लूज हैं उसको हम यूज करके हम कोशिश करेंगे इसको देखने का। द बीसीसीआई हैज बीन रिसेंटली इन्वॉल्व इन, सो और एक चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूं, राइट, कैंडिडेट्स को, कि कभी भी पहले ऑप्शंस मत देखिएगा, राइट। तो इसमें हम क्लूज में ऐड कर सकते हैं, राइट। सेवेंथ क्लू में हम ऐड कर सकते हैं कि आइडियली डू नॉट रीड द ऑप्शन फर्स्ट। कुछ कुछ चीज होता है, कुछ कुछ एरियाज होता है जिसमें आप पहले ऑप्शन पढ़ सकते हो, बट फिलर क्वेश्चन में पहले ऑप्शन मत पढ़ो, राइट। सो पहले सेंटेंस को अच्छी तरह से समझ लो। द बीसीसीआई हैज बीन रिसेंटली इन्वॉल्व इन, राइट। तो कुछ इधर उधर हुआ है ऑफ फंड, तो फंड्स का इधर उधर हुआ है, ये समझ में आया। एंड द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट एंड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो ये दो डिपार्टमेंट उसका छानबीन कर रहे हैं, राइट। ब्लैंक, उनको लग रहा है दैट द सीनियर मेंबर, तो यहां पर कुछ एक आइडिया कर रहे हैं या एक सोच रहे हैं, सो कि सीनियर मेंबर्स इस स्कैम में इन्वॉल्व हैं। अभी हम आते हैं ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहे हैं, ए का फर्स्ट ब्लैंक का बोल रहे हैं यूजिंग। द बीसीसीआई हैज बीन रिसेंटली इन्वॉल्व इन यूजिंग ऑफ फंड, राइट। यूजिंग ऑफ फंड, ये जो क्लू के अंदर आएगा वो क्लू क्या है कि नंबर 8, carefully look at the grammatical correctness of the sentence, of the words that fit into the blank space। ये चीज बहुत जरूरी है
केयरफुली लुक एट द ग्रामेटिकल करेक्ट। अभी चलते हैं क्वेश्चन, राइट। इन्वॉल्व इन यूजिंग ऑफ, यहां पर ये जो ऑफ प्रपोजिशन है, राइट, इसके पहले यूजिंग नहीं होगा। इन्वॉल्व इन यूजिंग फंड्स और यूजिंग द फंड्स, आर्टिकल है, राइट, स्पेसिफिक फंड्स जो है बीसीसीआई, राइट। सो ग्रामेटिकली दिस वर्ड इज नॉट फिटिंग इन दिस ब्लैंक, जो कि ये फिट नहीं हो रहा है तो दूसरा वाला फिट नहीं होगा ऑटोमेटिक, बट फिर भी देख लेते हैं क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। एंड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डाउट दैट द सीनियर मेंबर्स आर इन्वॉल्व इन दिस स्कैम। डाउट इज मोर और लेस अ करेक्ट ऑप्शन, बट जो कि पहला वाला ऑप्शन कर दिया है, सो ए गोज आउट। बी, मिस अप्रोप्रिएशन, राइट। मिस अप्रोप्रिएशन, इस शब्द का मीनिंग क्या होगा? इस शब्द का मीनिंग होगा नॉट बीइंग यूज्ड अप्रोप्रिएटली, ठीक काम से इसको यूज नहीं किया गया, नॉट बीइंग यूज्ड अप्रोप्रिएटली, मिस अप्रोप्रिएशन, राइट। सो इन्वॉल्व इन मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, जबकि फंड्स को ठीक जगह पे ठीक तरीके से यूज नहीं किया जाता है, देन ऑटोमेटिकली इट इज मिस अप्रोप्रिएशन, which definitely is not legal. So misappropriation can be the right option. And the enforcement and directorate and the income tax department suspect means sandeh, right? They are suspecting or doubting, right? Suspect is a more appropriate word here, right? So suspect also is a correct word. Suspect that the senior members. So फिलहाल B seems to be the correct answer. But जैसे कि मैंने बताया, you have to read all the options and then you decide कि कौन सा वाला सही है, right? So control, involve in control of funds, so has been recently involved. So देखिए यहां पर लिखा हुआ है recently involved इन कंट्रोल ऑफ फंड्स। इन कंट्रोल ऑफ फंड्स करेक्ट है, बट रिसेंटली इन्वॉल्व क्यों? जब से बीसीसीआई बना है तब से उनका जो पदाधिकारी लोग हैं, द पीपल हु आर द मेंबर्स, दे विल डेफिनेटली कंट्रोल द फंड्स। तो रिसेंटली इन्वॉल्व यानी कोई चक्कर में घुसा है, तो ये तो द स्ट्रक्चर, जैसे हमने बताया था, स्ट्रक्चर क्लूज द पैटर्न ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। तो यहां पर जो पैटर्न हो रहा है, यहां पर जो मीनिंग हो रहा है, वो मीनिंग रिसेंटली इन्वॉल्व के साथ इस वर्ड का इट इज नॉट मैचिंग। कोई रिसेंटली इन्वॉल्व नहीं होता है फंड्स का मैनेजमेंट में या फंड्स को हैंडलिंग में, राइट। इन कंट्रोल ऑफ फंड्स, वो तो कंट्रोल तो पहले से, जब से संस्था बना है तब से तो फंड्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, उसको मैनेज करना पड़ेगा। सो कंट्रोल इज as per the sentence is concerned, इस जगह पे control is not matching. And the enforcement directorate and the income tax department question that the senior member, यहां पर once again grammatical error, question the senior members, वो हो सकता है मगर वो भी नहीं होगा, बिकॉज फिर जाके क्वेश्चन का ईडी फॉर्म लगेगा। क्वेश्चन द सीनियर मेंबर्स, राइट। और फिर यहां पर भी हु, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं होने से किसको क्वेश्चन किया? क्वेश्चन द सीनियर मेंबर्स हु आर इन्वॉल्व इन द स्कैम, तब जाके ये क्वेश्चन वाला जो वर्ड है ये ग्रामेटिकली करेक्ट रहेगा। सो दिस इज इनकरेक्ट, राइट। इन्वॉल्व इन, रिसेंटली इन्वॉल्व इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड। चलो, grammatically as per the use of the word distribution of funds is okay, right. And the enforcement directorate and the income tax department find that the senior members are involved in the scam. So find होगा found, right, क्योंकि find होगा found
because यहाँ पर it is talking about the past, right? So grammatically tense के हिसाब से ये correct नहीं है, right? और distribution यहाँ पर जो theme of the sentence है उसके साथ distribution is not matching, because distribution usually is used in positive sense. So finally हम ये decide करते हैं कि B is the correct answer. B is the correct answer. Okay? So यहाँ पर हमने दो एक clue फिर से पता किया, right? And we can use these clues to solve the question. Okay? Right? So this is the second one. चलिए और एक देखते हैं. The size of the old computers, old desktop computers always caused problems when offices were shifted. However, today, due to the invention of microprocessors, computers nowadays into our hands and mobility is no more in question. Option A, unwieldy state. B, sorry, unwieldy fit. B, small state. C, round go. And D, biggest slip. अभी देखिए यहां पर जो हम बोलते हैं, राइट, द नेक्स्ट क्लू इज very important. If there are two sentences, second sentence or part of a
or second part of a sentence diverts or is opposite or contradicts the first part words like उस वर्ड्स का मैं लिस्ट बनाता हूं राइट बट despite yet however nevertheless unless rather though although while unfortunately ironically etc are used अभी ये क्लू देने के बाद फिर से चलते हैं हम क्वेश्चन को देखते हैं The blank size of the old desktop computers always caused problems when offices were shifted. पहले के ज़माने का कंप्यूटर जो था उसका जो साइज था वो बड़ा बड़ा था राइट वो एक इतना बड़ा पुराना टेलीविज़न जैसा उसका मॉनिटर होता था उसके साथ बड़े बड़े CPUs होता था वगैरह वगैरह राइट However, note the word, however, today due to invention of microprocessors, micro means छोटा, computers nowadays blank into our hand and mobility is no more in question. आज की डेट में ये मोबाइल फोन जो आप हाथ में पकड़ के घूमते हो, राइट, वो भी तो एक कंप्यूटर है, राइट। चलिए ये सेंटेंस में दो ऑपोजिट आइडियाज डिस्कस किया गया है सो दिस इज अ फिलर टाइप ऑफ दिस इज अ क्वेश्चन विच इज अ फिलर क्वेश्चन ऑफ अ डिफरेंट टाइप सो ए बोल रहा है अनविल्डी मीन्स cumbersome राइट uncomfortable to handle uncomfortable to handle. So unwieldy, cumbersome, uncomfortable to handle. So the unwieldy size of the desktop computers always caused problems when offices were shifted. Obviously, एक ऑफिस में अगर 20 कंप्यूटर हैं तो उसको कहीं दूसरा जगह ऑफिस शिफ्ट हो रहा है तो उसको ले जाने में आपको बड़े बड़े बॉक्स बुलाना पड़ेगा, कार्टन्स बुलाना पड़ेगा, उसमें भरना पड़ेगा, फिर कोई टेम्पो या छोटा ट्रक वक्त में लेके जाना पड़ेगा. Okay. However, today, due to invention of microprocessors, computers nowadays fit into our hands. So unwieldy भी correct word जो कि वहाँ बैठ सकता है. Fit into our hands is the right phrase. Fit into hands. Our hands is the right phrase. तो अभी तक लग रहा है A is the correct answer. The small size of the old desktop. So इस टाइप का क्वेश्चन में मैं और एक क्लू देता हूं राइट द 10th क्लू इस टाइप का क्वेश्चन में द ऑप्शन विल बी एंटोनिमस इन नेचर. मे बी उसी वर्ड का एंटोनिम नहीं हो सकता है, बट द ऑप्शंस विल बी एंटोनिमस इन नेचर.
So small, the small size of the computer, old desktop computers always caused problems when offices were shifted. Sentence का sense नहीं बैठ रहा है. ऑफिस जब शिफ्ट हो रहा है तो स्मॉल साइज का प्रॉब्लम क्या है? हाउएवर टुडे ड्यू टू इन्वेंशन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर्स कंप्यूटर्स नाउअडेज स्टे इनटू आवर हैंड. स्टे के बाद इनटू नहीं होता है, स्टे के बाद इन होगा. सो यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर है. और स्टे इनटू आवर हैंड, अगर वहां पर इन की जगह इंटू के जगह इन भी होता तो स्टे इन आवर हैंड मीन्स क्या? हाथ में चिपक के रह जाता है. सो इट इज नॉट मेकिंग अ सेंस ऑल्सो. तो पहला तो स्मॉल इज इनकरेक्ट, फिर स्टे ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, सेंस वाइज भी इनकरेक्ट हो रहा है. सो बी इज स्ट्रेट अवे नॉट ऑप्शन. द राउंड साइज ऑफ ओल्ड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, ग्रामेटिकली ये तो करेक्ट है, राइट. चले आगे देखते हैं. कंप्यूटर तो राउंड नहीं होता फिर भी, राइट. ऑलवेज कॉज प्रॉब्लम्स इन ऑफिस वर शिफ्टेड. सो राउंड हुआ, स्क्वायर हुआ, ट्रायंगल हुआ, उससे शिफ्टिंग का प्रॉब्लम क्यों होगा? सो राउंड इज गॉन. हाउएवर टुडे ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर्स कंप्यूटर नाउअडेज गो इनटू आवर हैंड. क्यों? वो चल सकता है क्या? Is it a living thing that it will go and sit in our hand? So this word is irrelevant, contextually irrelevant. The biggest size, biggest हम जब adjective use कर रहे हैं, right? Okay. So as compared to what? As compared to what? किसके साथ कंपेयर करके हम इसको बिगेस्ट बोलते हैं? रोज इज द स्वीटेस्ट फ्लावर. तो हम दूसरा जो फूल है उस फूल के साथ हम रोज को कंपेयर करके फिर बिगेस्ट बोल रहा हूं. बट यहां पर तो कोई कंपैरिजन नहीं है, तो बिगेस्ट नहीं होगा. एंड स्लिप इन टू आवर हैंड्स, ये कोई छोटा सा पेपर चिट है. एग्जाम में मैं बैठ के एग्जामिनेशन हॉल में मैं एग्जाम लिख रहा हूं तो कुछ क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता है तो कोई मेरा दोस्त एक हाथ में मेरा चिट्ठा पकड़ा दिया, राइट, चिट पकड़ा दिया, तो दैट कैन बी कॉल्ड स्लिपिंग इन टू माई हैंड. बट यहां पर तो स्लिप वर्ड का कोई कॉन्टेक्चुअल रेलेवेंस नहीं. सो सी इज नॉट द आंसर, डी इज नॉट द आंसर, बी इज नॉट द आंसर, सो ए इज द आंसर. सो दिस इज द नेक्स्ट वन. दिस इज द नेक्स्ट वन. ओके. सो ये और एक टाइप का फिलर क्वेश्चन का हमने देखा कि हाउ these questions are. Okay. Now let us see the next one. The union government has the telecom operators to launch 5G network system in addition to of 5G handsets for consumers to immediately experience the super fast speed of this new internet related technology. राइट. अभी चलते हैं हम इसका ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन ए इज हैज
stocked such be distributed selling C approved sale and D restricted and banned. The Union government has blanked the telecom operators to launch 5G network system in addition to blank of 5G handsets for consumers to immediately experience the super fast speed of this new internet related technology. 5G is a new technology which has been launched 5G network, right? Has approved the telecom. In addition to sale of, it has to be simple present tense. It has to be simple present tense. And that in addition to sale of 5G handsets for consumers to immediately experience the super fast speed of this new internet related technology. Restricted. The sentence is in a positive tone. It talks about the new 5G technology which different companies have waited after the invention of such technology abroad and they now want it to be launched in the Indian market. So in that case, restricted is a word which contradicts the idea. Why should it restrict? It is a technology which will benefit the consumers. It is the technology which will benefit the telecom operators. It is the technology which will help consumers, people who have taken connections from the different telecom operators, experience a super fast speed on their internet connection. So, restriction contradicts. To ban off. So, why should it ban? So, this also is a serious non-contextual word. It's a serious non-contextual word. So, restricted is incorrect, goes against the idea. Ban is also incorrect. It goes against the idea. So, D is not the correct answer. So, what we see is A is not the correct answer, B is not the correct answer, C is the correct answer because it talks about approved, has approved the telecom operators to launch 5G network system in addition to sale of 5G handsets for consumers to immediately experience the super fast speed of this new internet related technology. So let us once again do a recapitulation और एक बार देखते हैं solving clues क्या क्या है. Read the sentence carefully and completely. पूरा पढ़ लेना. Otherwise questions will be tricky, sometimes difficult. तो उसको समझना मुश्किल हो जाता है. Try to understand the tone of the sentence. सेंटेंस का टोन हमने नेगेटिव टोन वाला सेंटेंस देखा, हमने पॉजिटिव टोन वाला सेंटेंस देखा, राइट. हमने ऑप्टिमिस्टिक टोन वाला जो 5G वाला लास्ट क्वेश्चन हमने किया उसको देखा एंड लाइकवाइज टोन को समझ लीजिए, फिर आपको ऑप्शंस चूज करने में सुविधा होगा. आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चरल क्लू. वो उस वर्ड को वहां बैठाने से सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही बन रहा है कि नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो वो आइडेंटिफाई करिए. ट्राई टू यूज द शैडो वर्ड. अपने से कोई एक सिनोनिमस वर्ड जो है उस ब्लैंक के हिसाब से और या उस ब्लैंक में ट्राई टू यूज दैट.
Okay, before you finalize, if you can't find out a synonymous words, it's okay, right? You can use the other clues, but this will also trigger your direction towards the correct option. See that the word in the blank space appropriately fits into the sentence. As I said, never click on an option and shift to next question before you read, understand and match all the options. जैसे मैंने बताया, मैंने हर क्वेश्चन जो सॉल्व किया, वो सारे क्वेश्चन में मैंने सारे ऑप्शन को एक के बाद एक पढ़ा. इवन इन डबल फिलर क्वेश्चन, जहां पर कि एक ऑप्शन अगर हमें लगता है कि दैट इज श्योरली द इनकरेक्ट ऑप्शन, सो आई एम नॉट लीविंग इट अवे. एक इनकरेक्ट देख के मैं छोड़ नहीं रहा हूं, लग रहा है शायद इनकरेक्ट है, बट इट माइट नॉट बी इनकरेक्ट. सो मैं दूसरा में भी आई एम ऑल्सो रीडिंग द सेकेंड वन इन दैट पर्टिकुलर ऑप्शन. पार्ट ए पार्ट बी, जो अगर हम इस तरह से डिवाइड करते हैं, तो ऑल्सो रीडिंग द पार्ट बी एंड देन वी आर डिसाइडिंग कि ये आगे में चलेगा, राइट. The second sentence, part of a sentence diverts or opposite or contradict, so ये सब word होगा. If it is